Good to have you with us here watching the news with me, Avni Raja. We're making a start here with some breaking news that's coming in. A delegation of Congress leaders led by Congress leader Rahul Gandhi are marching towards Rashtrapati Bhavan to submit a memorandum to the President. Several Congress leaders, including Priyanka, have been detained. They intend to submit around 2 crore signatures collected from across the country in the past 3 months seeking a repeal of the 3 farm laws. The police said that only the leaders who have permission will be allowed to meet the President. Section 144 has been imposed around the Rashtrapati Bhavan and Parliament House at this point. No permission has been granted by the police for the march itself. Those are the details coming in. There have been a lot of Congress leaders who have been detained as well. Let's listen in to Priyanka Gandhi. अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, आज वो नारा बंद हो गया है क्या? जवान किसान का बेटा होता है, आप सब जानते हैं, किसान का बेटा होता है। तो किसानों की जो आवाज ठुकरा रहा है, जो नहीं सुन रहा है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ, जबकि देश का अन्नदाता बाहर बैठा हुआ है ठंड में, महीनों से बैठा, 1 महीने से बैठा है, तो आप बताइए। लेकिन प्रियंका तो आप बताइए उस सरकार के दिल में क्या जवान के लिए, क्या किसान के लिए कोई आदर है कि सिर्फ अपनी राजनीति का आदर है, अपने जो पूंजीपति मित्रों हैं उनका आदर है। Let me in fact go across to Alok, who's joining us for more at this point in time. Alok, what can you tell us about the situation? What's happening right now? Yes, definitely. A few minutes ago from right now, there was little bit chaotic situation outside this Congress AICC office, and in fact at this particular street, this is 24 Akbar Road, and outside this road, at this particular road, there was a lot of kiosk happened because there were a lot of Congress workers were present. That include Congress senior leaders, all MPs, what we can say, whether it's Priyanka Gandhi, who's the senior leader also, she was also there. And they were all trying to march towards the President House. At this route that they were trying to march towards the President House, but there was a barricading put up by the police, Delhi police officials. Large number of police personnel were present. In fact, you can see there is still police personnel, some little bit police personnel are still present outside the ICC office. And in fact, they were not allowed to march towards the Vijay Chowk. These people were wanting to go towards President House to give the memorandum. The memorandum containing 1.8 crore signature of the farmers who are opposing these farm laws. So Congress party wanted to give that memorandum with all the full of strength. They wanted to march towards the President House. There is the full arrangement, security arrangement was put up at the Vijay Chowk near the President House as well. Police yesterday, in fact, did not give the permission to the Congress party when they sought the permission to go to march towards the President House. The Delhi police cited the reasons of Corona pandemic, and from this road, in fact, the Delhi police gave the permission to only 3 leaders that include Rahul Gandhi to go and give the memorandum to President. So now what right now the present situation is Rahul Gandhi and 2 other leaders, that Adhir Ranjan Chaudhary and Ghulam Nabi Azad. These 3 leaders have gone to give the memorandum. All right. Yes, Alok, please go ahead. Yes, so at that point in time when Priyanka Gandhi and other leaders, other senior party leaders like Jitin Prasad and also Dipender Hooda, these are the MPs who were marching towards this road, towards President House. At that same road, there is the roundabout, and at that roundabout there was a police barricading. Paramilitary force were deployed, and they were immediately picked up by the police, shoved in the buses. There were 2 DTC buses in which they were shoved, and then they were taken to the police station. What we are learning right now, they have been taken to the police station where they will be kept for few hours. Then later they will be allowed to go. But right now, the Congress workers, leaders, politicians, and all the senior leaders who are protesting against these farm laws
Around what we are learning, around 200 of them have been detained by the police, and they will be kept in the police station for a few hours, then later will be allowed to go. So right now, Rahul Gandhi has already reached to Vijay Chowk, and from there he will go to President House, and then he will give the memorandum. And that memorandum containing 1.8 crore signature of the farmers. So this is right now the situation is at this particular road. This is 24 Akbar Road. The situation is normal. The traffic has now been opened. But few minutes ago, there was a lot of chaotic situation happened over here. Back to you. That's right. Alok, also like you were pointing out, some of them have been detained. Priyanka Gandhi is one of them. And also we know that the police has said that only those who have permission to enter Rashtrapati Bhavan and meet the president will be allowed to do so. Do we know at this point who are those who are being allowed to go to Rashtrapati Bhavan at this point in time? Alok, just before I come to you on that, those are the visuals coming in right now of Rahul Gandhi along with senior other Congress leaders. It looks like Rahul Gandhi is going to say something at this point. Let's cut across. अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विथड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो किसान बैठे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है।
मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। The government is going on an aggressive campaign from tomorrow onwards to give money, 6,000 rupees, 18,000 crores. They're trying to change the narrative. Look, the point is, it's a very simple thing. There are millions of people who live off our agricultural system. Large percentage of our people live off our agricultural system. These are laborers, they are farmers, they are small traders. These are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people. He will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to 3 or 4 people continues. He will call people terrorists. He will call people anti-nationals. He will call people criminals. He will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people, 3 or 4 of them, 5 of them. That's the crux. And we are fighting this. We are saying that in India, where you have destroyed the agricultural system, will not function. Just like I said, take Corona seriously. Corona is going to kill people in massive numbers if you do not act. At that time they said, scaremongering. Now they're not saying scaremongering. When I suggested to the Prime Minister that do not do this in a centralized way, give power to the chief ministers, he didn't do it. He caused thousands and thousands of people to die because he didn't do it. And then afterwards, after I said it in the press conference, he did it. So the point is, you have an incompetent man who is controlled by certain other people. This is what India has to understand. This is what all youngsters have to understand. You have an incompetent man who doesn't understand anything, running a system on the behalf of 3 or 4 other people who understand everything. And their aim is to take huge amounts of money from the poor people of India and put it in their pockets. And that is what we are fighting. And frankly, it doesn't matter what you think right now, because all of you will face this. There's not going to be a single person in this country who's not going to face this. If you're a farmer, you will face it. You're a small businessman, you will face it. You're a journalist, you will face it. This is an assault on the idea of India. That is why we're standing here. That is why I've gone to the president. That is why we've signed these forms. So you posted a tweet about Wayanad yesterday about a family which was struggling while doing their farming. But there are several more instances like this. But the BJP is saying that this is just Punjab and farmers who are protesting here at the delegate. No other farmer in the country has a problem with the reform. That's just not true. That is just not true. We are not allowed to go out. We are not allowed to go out of the ICC office. The police stops us from going out. Why don't you let us go out? Why don't you let me go and tour in the states? See what happens. Every single farmer of this country, every single labor of this country stand up. But आप पुलिस लगवाते हो, हाथरस जाते हो, अरेस्ट करते हो, तो AIC से हमारे MPs को बाहर नहीं निकलने देते हो, और फिर कहते हो कि भैया मतलब सब कुछ ठीक है. और Prime Minister needs to realize that there is a limit to this. आपने थोड़ा सा करना है, आपने 2-3 लोगों की मदद करनी है, थोड़ा सा करना है, आप कर सकते हो. बट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिलेगा.
सारे छोटे बिजनेस, सारे मिडिल साइज बिजनेस खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिए, जिस चीज को आप सब भूल गए हैं, चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में चुप क्यों है? तो मेरा कहना है कि पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तरफ आप अपने सिस्टम को तोड़ रहे हो, आप अपने लोगों को लड़ा रहे हो, आप अपने किसान को मार रहे हो, मजदूर को मार रहे हो, और दूसरी तरफ बाहर से फोर्सेस देख रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कमजोर कर रहा है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। मैं देश को बता रहा हूं, मैं वार्निंग दे रहा हूं कि आप देखिए क्या हो रहा है। और मैं आपको भी कह रहा हूं, प्रेस वालों को भी कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आपको सैलरी मिलती है और आपके लिए बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूं बात, इसलिए आप नहीं कह पाते हो जो आपको कहना है। मगर आपके देश को, हमारे देश को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। बहुत डेंजरस रास्ते पर यह देश चल रहा है, ये मैंने कहना। कांग्रेस के नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। आप लोग मार्च लेके यहाँ पर आ रहे थे, अभी जो है कांग्रेस के तमाम एमपी को इंक्लूडिंग प्रियंका जी को भी जो है डिटेन कर लिया, उसका आपको? वो तो तरीका है, इनका तरीका है डिटेन करना, मारना पीटना, ये इनका तरीका है। बट हम नहीं डरते नहीं। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? ये मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। थैंक यू। गुलाम नबी कुछ नहीं, आप कुछ सरकार का जो कैंपेन है वो बार-बार इस बात को रख रही है कि जो कृषि कानून है वो निजी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में निजी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, जो बहुत जरूरी है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूरा कैंपेन सरकार का इसी बेस पे और वो हर घर तक, हर गाँव तक जाना चाह रहे हैं इस कैंपेन? सवाल ये है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा और इन्वेस्टमेंट का फायदा किसको मिलेगा? सवाल ये है। आपकी सर रणनीति नहीं, सुनिए, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में कौन इन्वेस्ट करेगा और कौन पैसा बनाएगा। हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम में आज तक किसान ने इन्वेस्टमेंट किया है, मजदूर ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो जवान हमारी सेना बॉर्डर पे खड़े हैं, इनके माता पिताओं ने किया है। इन्वेस्टमेंट ये करते हैं और रिटर्न किसको मिलता है? रिटर्न 2-3 उनके उद्योगपति मित्रों को मिलता है। ये पूरा देश जानता है, पूरा देश इस बात को समझता है कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। बहुत दूर खड़ा है, लागू कर दूं? आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर बीएसएफ में, हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? नहीं, मैं तो जानती हूँ, लेकिन अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मेरी मदर फार्मर है। मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया? आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? यही हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है इस बात को काउंटर करने के लिए, गांव तक जाना? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही हैं? काउंटर करने, आप क्या बात कर रही हैं काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि, अरे भाई आपको क्या, आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो बैठा, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए क्या? क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है। इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू वेरी मच।
All right, well, that was Rahul Gandhi there addressing the media after meeting the president, clearly once again lashing out, scathing attack on the centre and on the Prime Minister over this entire issue of farm laws. He said that they have told the president that the farm laws are anti-farmer and taken several signatures as well. Crores of signatures, in fact, have been taken to the president of those who are against these farm laws. Let me go back to Alok at this point in time. Alok, we just, of course, there heard Rahul Gandhi, what he had to say over this entire issue right now. Yes, absolutely. In fact, Congress party want to show solidarity towards the farmers. Around 40 to 50,000 farmers are sitting at various borders across the national capital in the NCR region as well. So now the Congress party also trying to yes, definitely, every political party is politicizing this issue and they try to get the benefit of that. So in that way also that we can say that Congress party is also there. Congress party and various opposition parties are also, in fact, supporting these protesting farmers. Now, today, the Congress party wanted to do the protest march from AICC office, where right now I'm standing, to the President House, and it is around 2.5 kilometers from this place. Now, there were two buses were also came here by the Congress party, and in these two buses, the Congress MPs and other leaders wanted to go, but the police did not allow these two buses to move from this place. And when these buses were not allowed, when these MPs were not allowed to ply on the buses, then the MPs started marching from this place. However, at the same time, the Delhi police also gave permission to three senior leaders, Ghulam Nabi Azad, Adhir Ranjan Chaudhary, and also Congress leader Rahul Gandhi, three leaders to come and they can give memorandum to the President of India. These people wanted to give the memorandum containing signature of 1.8 crore farmers. They were allowed. So one side, Rahul Gandhi and two other leaders went to President House, but other leaders, those who gathered over here, Priyanka Gandhi was also present. They wanted to march towards President House, and when they were marching towards President House, they were detained. Now they have been taken to police station, but Rahul Gandhi has just spoken to the media, and he has just lashes out on the BJP and Narendra Modi as well. Now, now already we all know that that farmers are sitting at various borders, and they are again and again and repeatedly saying that they don't want to politicize this issue. But right now, Congress party have showed solidarity towards the farmers. Back to you. All right, Alok. Thank you so much for joining us with all of those details.